Now, in the free crash course of physics, the second point in electricity is the relationship between current density, which is denoted by J, and electric field, which is denoted by E. And since by the definition current density equals to current per unit area, means suppose this is a wire of non uniform cross section कि इसका एरिया अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे यहाँ थिनेस्ट है, यहाँ ब्रॉडेस्ट है, तो जब एक करंट एंटर होगा तो एरिया वाइज जैसे यहाँ सबसे कम एरिया है तो करंट का अमाउंट तो कांस्टेंट रहेगा. सपोज वी आर सेंडिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 10 एम्पियर, सो ओवर हियर J will be 10 divided by the less area. Over here current will be 10 divided by the broadest area. So current density goes on changes. So to make non-uniform distribution as uniform distribution, we are taking this concept. Now according to the formula, SI unit of current density is ampere per meter square in symbolic form, and in vector form, that is vectorially, we can write that current is equal to the dot product of current density and area vector. I revise the thing. Current is defined as the dot product of current density and the area vector. Hence we know that current density is a vector quantity, so it will have magnitude, direction, as well as obeys the laws of vector addition, which three qualities are needed for a quantity to be a vector quantity. And in integration form, this is represented as J dot dA vector. So this can be done in the calculus form. Now suppose we consider Ohm's law, which is V equal to I into R, and also we are taking a conductor which has length L, then the potential difference developed will be V is equal to E into L, where E is the electric field across the or inside the conductor. So therefore putting both these values equal, we get EL equal to I into R. Now as we know, in the first lecture I have covered, resistance is defined as the product of resistivity into length per unit area. For a material, rho will be constant. So putting this value here, this is EL is equal to I rho L upon A. So L cancel, and this is the current density. This I upon A is the current density. So we can now write electric field equal to I upon A is J. So this is J into rho. This is the relationship between electric field and current density. Hence we say that electric field is directly proportional to the current density. And if we want to write the vectorial form, then it will be E vector, because electric field is a vector quantity and resistivity is a scalar, and J vector. So this is multiplication of a vector by a scalar. So this is the vector form, vector relationship, and again E vector is directly proportional to J vector. Now as we know that conductivity equal to 1 upon resistivity, the symbol for conductivity is sigma and the symbol for resistivity is rho. So this relationship will becomes, see, this is the scalar relation and this is the vector relation. So scalar relation will be E equal to J divided by sigma
okay, J divided by sigma, because as we know sigma equal to 1 upon rho, so therefore to rho I am writing 1 upon sigma. Hence we can say J, that is the current density, equal to sigma into E. Again we get that electric field is directly proportional to current density, or current density is directly proportional to electric field. So as for competitive exams, electric field becomes stronger and stronger, current density will also be stronger. Now we will study what is the free electron model of electric conduction. Free electron, as the name suggests, that this is a metal. Suppose this is an atom of a metal, this is nucleus and the most inner orbits. So electrons are revolving in all the orbits. Let third one I have taken outermost orbit. Then third orbit electrons, that is the outermost orbit electrons, will feel the most feeble force. The word feeble means weak, and the electrons which are very close to nucleus will feel the strongest force. Hence they cannot move out of the atom. So who are free to move out of the atom? These outermost orbital electron, if by some conditions, that is by heating the metal or by giving it some sort of energy, they become free and they become charge carriers inside the metal. So these electrons become charge carriers because they can carry the electric field from one place to the other place. So this is the main difference between solids and liquids and gases, that in solids only the electrons are the charge carriers, that is they can cause the electric current to flow. In solids the current is composed by only due to electrons, means solids means I mean conductors. If we consider solids of semiconductor types, there may exist two types of ions, electrons as well as holes. Now in liquids and gases, both electron and positrons, means positive ions, can cause the electric current to flow. This is main difference between solids. Now in solids, again I repeat, two types of solids are there, metals and semiconductors. And insulators, so you know कि insulators don't carry the current at all. जब भी आप उनको चार्जेस देंगे तो वो चार्जेस उनमें अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड चार्जेस वहीं डंप हो जाएंगे, सो दे डू नॉट कैरी करंट और द फ्लोइंग चार्जेस. नाउ वी विल बी स्टडिंग द फिनोमेना ऑफ मीन फ्री पाथ, relaxation time, as well as drift velocity, which is very important for NEET और JEE. इसको हम लोग VD से शो करते हैं and this is denoted by tau and mean free path is denoted by lambda. So we will be studying mean free path, relaxation time, tau and the relation for drift velocity. Drift velocity means constant value of velocity after all electrons start moving. So let's take a metal sample. कंडक्टर का हमने एक सैम्पल ले लिया और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डिनोटेड बाय डॉट्स, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बाद में जो पॉजिटिव आयन बचेगा उसको मैं प्लस से डिनोट करती हूँ. प्लस विल बी द हैवी पॉजिटिव आयंस. So suppose 6 electrons become free
from an outermost single electron atom model, so there will be 6 positive heavy ions. ठीक है, ये हम assume करके चल रहे हैं. अब रूम टेम्परेचर पर मीन्स विच इज़ कॉल्ड एज थर्मल एजिटेशन, मीन्स हीट एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे. एंड रैंडम डायरेक्शन में मूव होते होते दे विल कोलाइड विथ ईच अदर, मीन्स इलेक्ट्रॉन से टकराएगा एंड पॉजिटिव हैवी आयन से भी टकराएंगे वो. तो हर कोलिजन के बाद में उनका डायरेक्शन चेंज होगा, माइट बी वेलोसिटी चेंज हो जाए. एंड वेलोसिटी क्यों चेंज होगा? बिकॉज हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए या फिर हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए, बिकॉज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो हर दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. फ्री मीन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. तो ऐसे सारे फ्री पाथ्स को ऐड करके नंबर ऑफ कोलिजन्स से जब हम डिवाइड करेंगे वी विल बी गेटिंग द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ. सो दिस फॉर्मूला इज़ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 up to lambda n for n number of collisions divided by number of collisions capital N. So this is the expression for mean free path. Next लेते हैं हम लोग what is the relaxation time. So जब आप इलेक्ट्रॉन की सारी वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे, बिकॉज आफ्टर ईच कोलिजन इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, द रीज़न में बी डायरेक्शन और स्पीड. सो जो आपके पास नेट वेलोसिटी आएगी और विच इज़ कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी ज़ीरो, बिकॉज u1 plus u2 and so on up to un divided by n, these are vector quantities. So all directions will be added and hence the average velocity will be 0. So let's assume only the room condition, means the average room temperature. Then in the given sample, since all electrons are moving randomly and they collide with heavy positive ions, so their net velocity is equal to 0. Because velocity is a vector quantity, random motion will create 0 velocity. Now as the external battery is connected to this conductor specimen plus and minus, current will start from positive terminal of the battery and all electrons will be accelerated towards the positive terminal of the battery. Hence a conventional current is introduced in the direction from A to B inside this sample, which is in the direction of electric field, and all electrons are moving opposite to the direction of electric field. Now the question arises whether this EMF produces an acceleration in the electrons or not, or why not we call these electrons as accelerated charges. The reason is every time when electrons are moving towards the positive terminal of the cell or battery, they collide with heavy positive ions which are the parental cause for their release from the metal ions or metal atoms, and then these electrons collide with heavy positive ions. So every time resistance is produced due to the collisions and hence EMF cannot accelerate the electrons. Therefore electrons get a constant velocity which is called as drift velocity in the circuit. Hence we say that acceleration whatever be produced will be called as force divided by mass,
by Newton's second law, and since electric force is equal to QE, since charges are the electrons, therefore it is EE divided by M. The main current we are taking due to the cause of flowing electrons, so we can take it as minus because the charge on electron is minus of E, and now we can put E is equal to V by L. Let L is the length of this specimen, and the potential difference across them to produce is V. So we can take E equals to V by L. So this is minus E V by L into M. So this is the acceleration acquired by electrons, and magnitude wise it is E into capital V divided by mass of electrons into length of the specimen in which they are travelling. Hence, whatever acceleration electrons get, we can use first kinematical equation for first electron, that it gets final velocity as v1 is equal to u1 plus a into tau 1, where tau 1 is the relaxation time. So relaxation time is the time taken by electron between two successive collisions, and for second electron this is v2 is equal to u2 plus a tau 2. Similarly, for nth electron it is Vn equal to Un plus A into tau n. All these tau are representing the respective relaxation time of different electrons. Hence the average drift velocity of electrons is given by V1 plus V2, that is adding all, room temperature, that is the average velocity value is equal to 0, and this is the mean relaxation time. So it is generally called as A tau. So drift velocity in all is equal to acceleration into the relaxation time. This is the relationship between drift velocity and relaxation time. So when acceleration is constant, the relaxation time is directly proportional to the drift velocity. Now the expression for the relationship between drift velocity and current in a conductor is given by I is equal to NEA into VD, where N is the concentration of electrons, that is number of electrons per unit volume of the conductor. Remember this is the volume of the conductor. E is electronic charge, which is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. A is the cross section area, and Vd is the drift velocity. Hence drift velocity is equal to I upon NEA. Next concept is the mobility. Mobility is denoted by mu, and it is basically defined as the drift velocity per unit the strength of electric field. I revise, mobility is defined as the drift velocity per unit electric field, because to understand this again we require a sample. Now this sample may be any conductor, any semiconductor, because in a solid conductor the current carriers are the electrons. In a semiconductor the current carriers are the electrons and holes. Now what are holes? These are the empty vacancies created by इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन जहाँ से अपनी प्लेस खाली कर देगा वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक होल. तो आप इस सैम्पल पीस को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, सॉलिड और सेमीकंडक्टर
means it is in the solid state of matter. Next we are taking alloys और gases. alloys भी सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में ही आता है. और नेक्स्ट केस लेते हैं आप लिक्विड्स का. इन लिक्विड्स एंड गैसेस द इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. तो जो आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे वो ही करंट को भी कैरी करेंगे. सो लेट्स एज्यूम आई एम रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स with the help of dots and holes with the help of empty circles. So they are moving in the direction according to the battery. This is external source of EMF connected. All holes will be drifted towards the negative terminal of the cell, but all electrons will be drifted towards the positive terminal of the cell. Hence they acquire drift velocity. Let the potential difference is V and the length of the sample is A and it is releasing a current of I, then the electric field is created as V by L. ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू NE into E A V E, where these two E are subscripts, and the current due to holes is equal to number of holes per unit volume into the charge on hole. The charge on hole is same as that of electron into A into VH. अब होल्स की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी से स्लाइटली कम होती है. नाउ द टोटल करंट फॉर्म्ड इज equal to the sum of electronic current plus hole current. So putting the values from above equation, we get I is equal to NE E A V E plus NH E A V H. Now taking common terms are E into A. So this is NE VE plus NH VH. This relationship is obtained by taking common E and A. Now dividing left hand side by area. So this is I upon A equal to E NE VE, where these are drift speeds. This is VH NH into VH, drift velocity of electrons, drift velocity of holes. So this current per unit area is called as current density, which is a vector quantity. We have discussed it already. So this is equal to J equal to E NE VE plus NH into VH. Now already we have derived one more relationship, that E upon rho is equal to I upon A is equal to J. So for J we can also put E upon rho E NE VE plus NH VH. So this is 1 upon rho, shifting this E to the right side inside the bracket. So this is E NE VE upon E plus NH VH upon E. Now this is called as mobility of electrons and this is mobility of holes. So this relationship will be, and reciprocal of resistivity is called conductivity. So this is E NE into mu E plus NH into mu H, where mu E and mu H are the mobility of electrons and holes respectively. Now our next topic is what is the effect of temperature on resistivity. तो आज तक आपने सुना होगा PTC एंड NTC, इस टाइप के दो टाइप के मटेरियल्स हैं कि PTC द फुल फॉर्म इज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस and NTC means negative temperature coefficient of resistance.
PTC का मीनिंग है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप को ओबे करके चलेंगे। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी, वेयर R0 इज़ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेटल्स एंड एलॉय इस रिलेशन को ओबे करते हैं। एंड NTC मीन्स RT इज इक्वल टू, जिनका अल्फ़ा निगेटिव हो, तो अल्फ़ा निगेटिव होने के कारण आपको यहाँ बीच में माइनस साइन मिल जाता है, बिकॉज दिस इज़ प्लस इंटू माइनस इज माइनस। बट वॉट इज़ द रीज़न फॉर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस? तो बिहेवियर के लिए वी हैव टू कंसीडर दिस रिलेशनशिप, रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू m divided by n e square tau into L upon A, where n is the number of electrons per unit volume, means concentration of electrons, tau is the relaxation time. अब कंसीडर करते हैं मेटल्स एंड एलॉयज़ जिनका बिहेवियर सिमिलर है। Alloys means mixing two or more metals to compose a composite metal which is called as alloy. Metals and alloys में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेट आई एम टेकिंग थीटा टू द टेम्परेचर, जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया उसकी मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ती जाएगी, बिकॉज हीट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया RMS स्पीड विल इंक्रीज़। इफ़ RMS स्पीड इंक्रीजेज देन मीन फ्री पाथ विल डिक्रीज़, क्योंकि दो कोलिजन्स के बीच में अब डिस्टेंस कम हो जाएगा। हेंस ये जो आपके पास क्वांटिटी है द रिलैक्सेशन टाइम, दिस रिलैक्सेशन टाइम कैन बी derived by this relation, because speed is equal to distance upon time. So general relationship is time is equal to distance upon speed. So we can substitute all three. This is tau, means relaxation time, distance is the mean free path, and speed is the VRMS, that is root mean square. जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया VRMS इंक्रीज़ हो गया, एंड हेंस दो कोलिजन्स के बीच का पाथ डिक्रीज़ हो गया। सो जो टाउ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मीन्स द रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज़। एंड एज वी कैन स्टडी हियर रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ रेजिस्टेंस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़। So at ordinary temperatures these metals obey the relationship R2 is equal to R1 1 plus alpha, T2 minus T1 are the different temperatures. And the graph for metals, if we plot a graph for metals and for alloys separately, this will be this type of for metals. Suppose we are taking example of copper, because this is resistivity, and over here I am taking the absolute temperature, resistivity, absolute temperature. So this is resistivity at 0 temperature, means this is nearly equal to 0. So we can see that resistivity at 0 absolute is not equal to 0, because it doesn't coincide with the origin. But for alloys this is a straight line curve, as this is a linear relationship, and for metals this is non-linear relation. So now we will study that what is the difference in metals and alloys, as both are PTC. but ऐसी क्या ख़ास बात है जो एलॉयज़ को मेटल से डिस्टिंग्विश कर देती है, एंड एलॉयज़ को इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही स्पेशल माना जाता है? सबसे पहला डिफरेंस है कि एलॉयज़ PTC तो है, मींस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज देयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज,
बट टेम्परेचर पर उनकी डिपेंडेंस बहुत ही कम है, और 0 केल्विन जैसे लो टेम्परेचर पर भी अगर हम देखें तो दे हैव वेरी लार्ज रेजिस्टिविटी, विच प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। रेजिडुअल मीन्स होता है बचा हुआ, तो जब हम उससे पूरा टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट कर लें, मतलब बिल्कुल कूल कर दें उसको 0 केल्विन पर, स्टिल उसमें लार्ज रेजिस्टिविटी है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, द रेजिस्टेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, सो कंडक्टेंस विल डेफिनेटली डिक्रीज, बट तो भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। एंड दिस रेजिडुअल रेजिस्टिविटी is a very useful tool which is used to check the purity of the metals. So let's see how it is used to check the purity of metals. If the metal is very pure, means no mixing is there, then residual resistivity at 0 Kelvin will be very small, सच एज़ 0 केल्विन मीन्स वेरी कोल्ड टेम्परेचर। तो अगर उसमें रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है, मीन्स वो मेटल बहुत प्योर है और उसमें मिक्स किए हुए मेटल्स का जो कॉम्पोजिशन है वो नेग्लिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक एलॉय नाइक्रोम, विच इज़ जनरली यूज्ड इन मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग निकल विथ chromium. Next topic is semiconductors, which are called as NTC. The full form is negative temperature coefficient of resistance. As the temperature increases, the resistivity of semiconductors decreases. So the resistance at T degree Celsius equal to R0 1 minus alpha T. एक्चुअल इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, थर्मल कोएफिशिएंट, वो नेगेटिव होता है, तो आपके पास नेट यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाता है। एंड इफ़ टू टेम्परेचर्स आर टेकन T1 एंड T2, देन रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर इक्वल टू रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर 1 माइनस अल्फ़ा एंड द टेम्परेचर डिफरेंस। सो अब मेन टाइप के सेमीकंडक्टर्स देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर टाइप आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अदर टाइप्स ऑफ सेलेनियम एंड कार्बन एक्सेट्रा। तो हम लोग मेनली जब डोमेस्टिक अप्लायंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जोन, तो वी यूज़ बेसिकली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नाउ कम्स इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं और फिर जिनसे प्रिपेयर किए जाते हैं केमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज NTC. सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल डिक्रीज। अब इसमें ऐसा क्या रीज़न है कि रेजिस्टिविटी कम हो रही है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो विस्कोसिटी होगी, मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। एंड जैसे ही विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी, आयंस विल गेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आयंस विल गेट more freedom to move here and there, hence the resistivity of electrolytes decrease with the increase of temperature. Now we will study what is electric energy and how much power is consumed in the electric circuit. For this, first we have to discuss that what is the term potential difference. ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, दैट V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q. सो लेट्स टेक Q एज द यूनिट चार्ज। मान लो आपने इसको ले लिया 1 कूलम, then V equals to W. So the potential difference between any two points in the electric circuit is equal to the work done in carrying a unit charge from one point to the other. For the understanding, suppose I am taking an electric circuit. This is a black box
ब्लैक बॉक्स मीन्स इसके अंदर क्या है अभी हमें नहीं पता, एंड दिस इज़ अ बैटरी. Extreme points are A and B, plus minus. Current is drawn from the positive terminal of the battery through outside the circuit. So this current is entering at point A and it exits out from point B I. So if the resistance of the black box means इस black box के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर रेजिस्टेंस हो सकता है, और इट मे बी अ स्पीकर, इट मे बी अ मोटर, और इट मे बी अ स्टोरेज बैटरी. Because we don't know what is inside, therefore it is termed as black box. तो जैसे ही current A to B पहुँचेगी, because due to the resistance of black box, a potential difference will be generated which is equal to V. अब चार्ज कितना एंटर हुआ, IT. 1 सेकेंड में कितना चार्ज एंटर हुआ, चार्ज एंटर हुआ Q इज इक्वल टू IT, एंड 1 सेकेंड में चार्ज एंटर हुआ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट. सो वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V. देयरफॉर पुटिंग Q एज IT, वी गेट वर्क डन एज VIT. दिस इज वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क डन by the cell to revolve the charge once round the complete circuit. अब ये जो वर्क डन जो बैटरी ने किया है वो हमें इस ब्लैक बॉक्स के थ्रू कैसे रिकवर करते आएगा. सपोज द ब्लैक बॉक्स इज़ अ रेजिस्टर, देन वी विल बी गेटिंग थर्मल एनर्जी फ्रॉम दैट ब्लैक बॉक्स. Now R equals to V by I using Ohm's law. So we can take the formula for work done in other terms as putting V equals to IR. This work done is I square RT. This is second format for work done. And now we have to remove this R. So this can be again the first form, मतलब साइक्लिक होता जाएगा ये. तो फर्स्ट फॉर्म आया आपके पास V एंड I के फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म I एंड R के फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म हम लोग लेंगे V एंड R के फॉर्म में. सो उसके लिए हमें I को रिमूव करना है. सो I इक्वल टू V बाय R. सो दिस वर्क डन इक्वल्स टू V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय R, एंड ऑल थ्री इक्वेशंस आर मेजर्ड इन जूल. Next term is the power consumed in the circuit. As from basics we know that power is the rate of doing work, so we can put all these three equations. So this may be VI, because हर बार T term cancel हो जाएगा. Second formula is I square R, and third formula is V square by R. So all these forms are the forms for electrical power consumed in the circuit. Suppose मैं ये formula लूँ और power की SI unit लूँ. So the SI unit of power is watt, capital W is the symbol, V का SI unit volt, और I का SI unit ampere. So we can say that 1 watt equal to 1 volt into 1 ampere, or it is also equal to, by the definition, power is equal to work upon time, so joule per second. So it is also equal to 1 joule per second. तो आपके पास वॉट का एक फॉर्मूला आता है वोल्ट इंटू एम्पियर, एंड दूसरा फॉर्मूला आता है जूल पर सेकेंड. Now watt is not sufficient unit, so larger units are used. So what are the larger units of power? First is kilowatt. So 1 kilowatt equal to 1000 watt. Second is megawatt.
Mega means 10 raised to 6. And other unit is used as HP, which is called as horsepower. मीन्स हॉर्सेस की पावर मेजर करने के लिए एक स्पेशल यूनिट है, दैट इज़ हॉर्स पावर. एंड दिस वी हैव स्टडीड इन 10th क्लास दैट 1 horse पावर इक्वल टू 746 watt. तो ऑब्वियसली 1 horse पावर इज 746 times heavier than the SI unit of power, means watt. So it is a bigger unit of power, and generally the power of electrical motors or pumps etc. is measured in horsepower in place of watt. Next question है हमारे पास कि how to calculate electric bill of any factory or any domestic appliance or houses. तो बिल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को मेजर करना होता है कि पर्टिकुलर हाउस या फैक्ट्री ने 1 month में या पर्टिकुलर डेज़ में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है. सो जब भी बिल कैलकुलेट करना होगा तो वी विल बी यूजिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ मेजर्ड इन किलोवाट आवर. ठीक है, द फुल फॉर्म इज किलोवाट आवर. Because joule is very small unit, so that might be a reason that electrical energy cannot be measured in joule because it is very small unit. So now we will be deriving the relationship between kilowatt hour and joule. अब इस यूनिट को हम कमर्शियल यूनिट तो बोलते ही हैं, साथ ही में इसका स्पेशल नाम है BTU. The full form is Board of Trade Unit. The full form is Board of Trade Unit, which is called as 1 unit if it is equal to 1 kilowatt into hour. So if we consume 1 kilowatt power for continuously 1 hour, it means we have consumed 1 unit. So the definition of 1 kilowatt hour is, if a power of 1 kilowatt hour is consumed in 1 hour, then the electrical energy consumed in the circuit is 1 unit or 1 kilowatt hour. Now we will convert it. For 1 kilowatt I can put 1000 watt, and for 1 hour we can put 60 minutes, then 60 second, so it is equal to 3600 second. So this is equal to 3.6 into 10 raised to 6 watt second. Now this is equal to, watt second is equal to joule, hence we can say that 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 raised to 6, and watt second means joule. कैसे आया देख लेते हैं. पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, so watt into second will be the unit of work, it means joule. Now I am ending the session. In next video we will be studying combination of cells, combination of resistances and many more things. Till then, bye bye, happy learning.